Hi guys, this is Jemin. Today we are going to study about demand. It's gonna be very easy, trust me. Then comes some competition. अगर एक प्रोडक्ट को लेके बहुत सारे कंपटीटर्स हैं, तो क्या होगा? प्राइस गिरेगा, बिकॉज सबको अपना माल बेचना है. सिंपल, इजंट इट? अगर उस प्रोडक्ट को लेके कोई कंपटीटर नहीं है, तो फिर प्राइस को लेके दादागिरी होगी. सो कंपटीशन ऑल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द प्राइसिंग एंड इन ऑल्सो डिटरमाइनिंग द डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड सर्विस. सो कंपटीशन आर ऑफ मेनी टाइप्स, इजंट इट? शॉर्ट एंड स्वीट में बता देता हूँ. मोनोपोली, ओलिगोपोली, परफेक्ट, मोनोपोलिस्टिक. आपके टेक्स्ट बुक में एक और नहीं दिया रहेगा, मोनोप्सोनी, विच इज एक्सेप्शनल केस. आगे वाली सीरीज में बताता हूँ कि ये कौन सा टाइप का कंपटीशन है. नाउ मूव ऑन टू दी नेक्स्ट फॉर्म ऑफ फैक्टर. ओके, यहाँ पर आ गया गवर्नमेंट पॉलिसीज. अभी कभी कभार गवर्नमेंट बैन सम प्रोडक्ट या गवर्नमेंट वांट्स यू टू बाय सम प्रोडक्ट. दे ट्राई टू स्टिमुलेट दैट थ्रू पॉलिसीज या थ्रू मॉरल सुएजन या थ्रू एनी गazette or notification. Then automatically the public demand also gets influenced at the same time, isn't it? So that is also one of the important factor in determining the demand. Then comes your habit. आपकी habit जो होती है. So habit यानी आपके जो preferences है, आपके जो choices है, they are some important sub units in the whole understanding of habits. So आपकी जो हरकतें होती है, that also creates demand, that also changes with time, right? Your habits are never gonna be same, isn't it? It changes because our whole economic behavior is shaped by various conditions, isn't it? And I have already mentioned some of these conditions by calling them as factors and determinants of demand. Similarly, our habits, our attitude towards purchasing, towards spending also play a very important role in shaping the demand. Then comes season, यानी climate. अभी बारिश के टाइम it's very rare to have mangoes, and even if you find mangoes, the price would be less because the quality would be deteriorating, isn't it? Or for example, now if you buy umbrellas in monsoon, the price will be high because everyone will be demanding umbrella, isn't it? So price is a signal that creates an equilibrium between the supply side and the demand side. So season also plays a very important role in creation and destruction of demand, isn't it? Now let's move on to the next factor, the most important factor, that is elasticity. So elasticity is simple. आपके पैजामा इज वेरी इलास्टिक, राइट? इलास्टिक मतलब स्ट्रेचिंग. ओके, सो डिमांड इज ऑल्सो वेरी इलास्टिक. जो मैंने आपको फैक्टर्स में बताया, वही चीज इलास्टिसिटी में भी आती है. फॉर एग्जाम्पल, प्राइस इलास्टिसिटी. प्राइस इलास्टिसिटी मतलब प्राइस रिस्पॉन्ड्स टू द डिमांड एंड द डिमांड रिस्पॉन्ड्स टू द प्राइस. सो ऑब्वियसली दिस रिस्पॉन्सिवनेस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी, isn't it? Then comes your income. So income also responds to your demand and demand also responds to your income. So there is a corresponding relationship here. There is an act of communication happening knowingly and unknowingly in this case. So this is why elasticity is also equally important when we are trying to understand demand. Then comes the cross elasticity. क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब ऑपोजिट में. डिराइव डिमांड याद रहेगा आपको, कार एंड पेट्रोल. अगर पेट्रोल का रेट्स बढ़ जाता है तो हम लोग कार बाद में खरीदने की कोशिश करेंगे. वी वोंट बाय इट नाउ बिकॉज इट वुड बी एक्सपेंसिव, इजंट इट? सो दिस इज कॉल्ड क्रॉस इलास्टिसिटी. सो क्रॉस इलास्टिसिटी में वी यूज दिस टर्म कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. We try to postpone our present for a future. We try to postpone our decisions. That is called procrastination in simple English. But in economics, it is called opportunity cost. So cross elasticity also plays a very important role when it comes to understanding the responsiveness. Then comes your promotion. So promotion यहाँ पर क्या हो गया? Advertising, marketing, they are also very equally important, right? अभी अगर आपने कोई प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा एड्स देख रही है तो उसकी डिमांड क्रिएट हो जाएगी. पीपल विल बी इन्फ्लुएंस एंड स्टिमुलेटेड टू बाय दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. सो एडवर्टीजमेंट पे अगर कंपनी ज्यादा एक्सपेंडिचर करती है, मतलब ज्यादा खर्चा करती है,
तो फिर उसका डिमांड भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा ही, बिकॉज पीपल गेट hallucinated, people get influenced to buy that product because everybody wanting to have it, isn't it? So that is called promotional elasticity, which also creates a very important role in the responsiveness stimuli of demand creation. Okay, now let's move on to certain other concepts which are also very important. Comes demand schedule. Okay, या schedule, जैसे भी आप बोले, British English, American English. Okay, so demand schedule क्या हो गया? You create a table of price paid and of quantity demanded. That's it. Okay, अगर आपकी हम ये इसलिए बनाते हैं to have a very clear cut and straightforward idea of what exactly we are paying for and what we are getting in. That's why we do demand scheduling, in order to understand how are things functioning, what kind of factors are shaping. So demand इसमें ना you basically try to tabulate. So आप इसको कुछ भी tabulate कर सकते हो. आप प्राइस और डिमांड को tabulate कर सकते हो, आप इनकम और डिमांड को tabulate कर सकते हो, आप टैक्स रेट्स और डिमांड को tabulate कर सकते हो. तो यहाँ पर हम लोग tabulation करते हैं. That is called demand schedule in short and sweet English. Then comes demand forecasting, मतलब प्रेडिक्ट करना. अभी यहाँ पर हम कुंडली तो पढ़ते नहीं कोई प्रोडक्ट को लेके, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट. तो डिमांड फोरकास्टिंग में क्या होता है? वी यूज सर्टेन इकोनॉमिक टूल्स, वी यूज सर्टेन मेथोडोलॉजिकल टूल्स टू अंडरस्टैंड डिमांड एंड हाउ दिस डिमांड विल बी गोइंग फर्दर. वी ट्राई टू प्रेडिक्ट, वी ट्राई टू एंटिसिपेट इन दिस रिगार्ड. So demand forecasting क्या हो गया कि we try to understand कि how will this pattern of demand move, in what direction it will move, in what way it will move, etc. etc. अब उसको measure कैसे करें? ऐसे तो है नहीं कि कोई प्रोडक्ट की राशि पढ़ ले और हमको पता चल जाए कि ये प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगा कि नहीं. बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है. Real life में we use certain tools and the most dominant one is survey method. So in survey method we try to ask people their opinions. We try to do random sampling. So these are some mode of conducting surveys. So random sampling में क्या होगा कि I will ask one person out of every 5 person and then try to make a assumption or generalization कि okay, this particular group will also be thinking in that way. फिर होता है स्नोबॉल सैम्पलिंग. उसमें आई विल आस्क वन पर्सन एंड गेट द कॉन्टेक्ट ऑफ अनदर पर्सन. सो वाया आई विल बी मोर इंटरैक्टिव. And this is how, with the help of survey, I will be asking the feedback of what the customer wants, what kind of changes they want, are they happy, are they not. So उससे मुझे पता चलता है. ये एक तरह का बिजनेस रिसर्च हो जाता है. And then I get to know how is a product performing, how it will be performing, and based on that, it signals the supplier, it signals the entrepreneur and the traders of how the product is performing at the same time. Then comes opinion. अब opinion में क्या होता है कि we just ask for feedback. कभी कभार we do after sales service कि सर मैडम आपको ये प्रोडक्ट कैसे लगा. We try to वो feedback formable तो okay good, okay bad. कभी कभार हम मजाक में टिक भी कर देते हैं, isn't it? So opinion लेते हैं to understand what the people think about this. So sometimes companies also indulge in such activities. Depend करता है whether they want to do survey, whether they want to have opinion. Sometimes they also do sales force activities. So sales force में क्या होता है कि direct the companies link with the sales people who are into selling of the products, basically retailers, या sales people, या you can say looking at the charts of the sales outcome. So उससे भी हमको पता चलता है कि okay how the product is performing, what we can anticipate, kind of responsiveness that happens to that particular product with reference to price, competition, etc. etc. Isn't it? फिर आ जाता है मार्केट एक्सपेरिमेंट. कभी कभार कंपनीज डायरेक्टली प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करती है. दे टेस्ट, दे डू अ पायलट स्टडी एट अ स्मॉलर लेवल. सो दे ट्राई टू सी, दे ट्राई टू टेस्ट what will work, what will not work, is this okay, how are certain population, certain audience, targeted audience or intended audience are responding to this. So that is called market experimentation, in which the product is experimented with few number of people and then the company takes steps to launch it at a very broader level. Then comes statistical mode. ये थोड़ा यहाँ पर आपका maths, econometrics आ जाता है. So statistical में we try to understand the linear models,
we try to understand the regression models, the circular models. So we apply all these models to understand how are they going to perform. So यहाँ पर आपके toolbar, graph आ जाते हैं, and nowadays we use Excel sheet. Formulas are ready, we just put in and we just get the quick updates, isn't it? So these are the various steps that the supplier, trader, or the corporations who are involved in enterprising of certain product and services use some form or use this kind of methods and methodologies in order to predict and anticipate the direction of themselves and also of the product.